नमस्कार दोस्तों, मैं टेलर जी क्यूएन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मटेरियल साइंस का 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे, जो कि क्वेश्चन सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड property of malleable cast iron is its high ductility, hardness, malleability या none of these। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डक्टिलिटी। The most distinguished property of malleable cast iron is its high ductility। नेक्स्ट है, in spheroidal graphite iron the graphite is in the form of spheroids, which is formed by the presence of small amount of magnesium retained in the iron। It is also known as the dash iron। ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, नोड्यूलर या बोथ बी एंड सी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, डक्टाइल एंड नोड्यूलर कास्ट आयरन। In spheroidal graphite iron, the graphite is in the form of spheroids, which is formed by the presence of small amount of magnesium retained in the iron। It is also known as the ductile and nodular iron। Next, cast iron in which molten metal has been treated with calcium silicide is called the एलोय कास्ट आयरन, मेहानाइट, ग्रे कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेहानाइट। कास्ट आयरन इन व्हिच मोल्टेन मेटल हैज बीन ट्रीटेड विथ कैल्शियम सिलिसाइड इज कॉल्ड द मेहानाइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस on the mechanical properties of steel? मैंगनीज, कार्बन, फॉस्फोरस या सिलिकॉन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन। Which of the following experience exercise most powerful influence on the mechanical properties of steel? सही आंसर है कार्बन। नेक्स्ट, presence of silicon in steel is in the form of free silicon, indicate that steel is not deoxidized property या decreases how blow hole formation tendency in casting या डी, none of these। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, decrease the blow hole formation tendency in casting। presence of silicon in steel decrease the blow holes formation tendency in casting। Next, which of the following contains maximum percentage of carbon? boiler plate steel, rail steel, saws for cutting steel या रेलवे स्प्रिंग स्टील। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, saws for cutting steel। which of the following contains maximum percentage of carbon? सही आंसर है ऑप्शन सी, saws for cutting steel। नेक्स्ट, which of the following alloy steel is the most suitable for making gun barrel and projectile? टंगस्टन स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, निकेल क्रोम स्टील या कोबाल्ट स्टील। सही आंसर है ऑप्शन सी, निकेल क्रोम स्टील। Which of the following alloy steel is the most suitable for making gun barrels and projectiles? सही आंसर है निकेल क्रोम स्टील। नेक्स्ट, which of the following alloy steel has the energy saving properties making it suitable for use in electrical machine? सिलिकॉन स्टील, क्रोमियम स्टील, मोलिब्डेनम स्टील या none of these। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिलिकॉन स्टील। Which of the following alloy steel has the energy saving properties making it suitable for use in electrical machine? सही आंसर है सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट, presence of chromium in steel reduce its hardness
is in the form of carbide, seriously affect its ductility, yeah, decrease its elastic limit and tensile strength. सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज in the form of carbide. Presence of chromium in steel is in the form of carbide. Next, temper brittleness makes the alloy steel brittle when cooled in air from the tempering temperature. Is a characteristic defect associated especially with dash steel, nickel chrome steel, chromium, टंगस्टेन या मोलिबोडियम. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निकेल क्रोम स्टील्स. द टेम्पर ब्रिटलनेस मेक द एलॉय स्टील ब्रिटल व्हेन कूल इन एयर फ्रॉम द टेम्परिंग टेम्परेचर. इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिफेक्ट एसोसिएटेड स्पेशली विथ निकेल क्रोम स्टील. बस. नेक्स्ट है प्योर निकेल इज फेरोमैग्नेटिक अबव इट्स कुरी पॉइंट दैट इज 415 डिग्री सेंटीग्रेड, या हैविंग HCP क्रिस्टल लैटिस, या फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर, या नॉट रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर. सही आंसर है ऑप्शन सी, फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर. प्योर निकेल इज फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट है austenite manganese is still used for making jaws of crushing machine contains about 10% manganese, 1.5 to 2, 3.5 to 4.5, या 7 to 9, या 12 to 14. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 12 to 14. Austenitic manganese is still used for making jaws of crushing machine can contain about 12 to 14% manganese. Next, tungsten steel possesses the property of red hardness because tungsten outstruct the austenite to pearlite transformation and act as a fixing agent for martensite which resist tempering. The tungsten percentage in steel varies from 1 to 5, 1 to 10, 1 to 15, या 1 to 20. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1 to 20. Tungsten steel possess the property of red hardness because tungsten obstruct the austenite to pearlite transformation and act as a fixing agent for martensite which resist tempering. The tungsten percentage in steel varies from 1 to 20. Next, molybdenum steel containing 0.15 to 0.40% molybdenum are prone to temper brittleness, are used for automobile parts like gear, axle, shaft, bearing, etc. Yeah, have very poor fatigue resistance, या do not contain nickel or chromium or both. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, are used for automobile parts like gear, axle, shaft, bearing, etc. Molybdenum is still containing 0.15 to 0.40% molybdenum are used for automobile parts like gear, axle, shaft, bearing, etc. Next, chrome vanadium is still usually contain 0.8 to 1.1% chromium, 0.25% to 0.35% carbon and 0.25% vanadium. It is used for making axle and shaft of aeroplanes, automobiles and locomotives. या बी हैविंग पोर फैटिक रेसिस्टेंस, या सी हैविंग पोर टफनेस, या डी नॉट हेल्पफुल प्रोड्यूसिंग क्लीनेस स्टील ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ वेनेडियम. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यूज फॉर मेकिंग एक्सेल एंड shaft of aeroplanes, automobile and locomotives.
Chromium, vanadium steel usually contain 0.8 to 1.1% chromium, 0.25 to 0.35% carbon, and 0.25% vanadium. It is used for making axle and shaft of airplanes, automobiles, and locomotives. Next है दोस्तों, silicon-manganese steel contains 0.7% manganese, 0.5% carbon, and 2% silicon. Do not require heat treatment for any of its applications. Yeah, are used for leaf and coil spring. Yeah, do not have good siliceans at resilience properties. Yeah, is temper at 850 डिग्री सेंटीग्रेड. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आर यूज्ड फॉर लीफ एंड coil spring. Silico-manganese steel containing 0.7% manganese, 0.5% carbon, and 2% silicon are used for leaf and coil spring. Next, straight silicon steel containing silicon from 0.5 to 5%. Because of their low hysteresis loss and high magnetic permeability are used for electrical appliances. Which of the following electrical appliances made of silicon steel contain maximum percentage of silicon, about 4%? Option A, armature of small motors या generator, या generator and small motors, या induction motors, या high frequency transformer. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर. Straight silicon steel containing silicon from 0.5 to 5%. Because of their low hysteresis loss and high magnetic permeability are used for electrical appliances. Which of the following electrical appliances made of silicon steel contains maximum percentage of silicon, about 4%? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर. नेक्स्ट है Hypersil is a dash steel, high speed, silicon, molybdenum या टंगस्टन. सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन स्टील. Hypersil is a silicon steel. नेक्स्ट है annealing of silicon transformer steel is done at 350 डिग्री सेंटीग्रेड in an oxidizing atmosphere, या to increase magnetizing force and core loss, या सी to obtain smallest possible grain size, या डी to increase its flux density and flux carrying capacity. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, to increase its flux density and flux carrying capacity. Annealing of silicon transformer steel is done to increase its flux density and flux carrying capacity. Next, nickel is not used for making ferrous alloy, या available in India in abundance, या used in cast form, या D having a BCC crystal lattice structure. सही आंसर है ऑप्शन डी, having a BCC crystal lattice structure. Nickel is not having a BCC crystal lattice structure. Next, nickel based alloy with dash are known as monel metal, जिंक, टिन, कॉपर या मोलिब्डेनम. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कॉपर. निकेल बेस्ड एलॉय विथ कॉपर आर नोन एज मोनेल मेटल. नेक्स्ट, spark plugs, ignition tubes and electrodes are made of nickel dash alloy, बेरिलियम, मैंगनीज या कॉपर या आयरन. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मैंगनीज एलॉय. स्पार्क प्लग, इग्निशन ट्यूब एंड इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ निकेल मैंगनीज एलॉय. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द copper based alloy with nickel contains zinc in addition to copper and nickel? क्यूप्रोनिकल, जर्मन सिल्वर, मोनेल या कॉन्स्टेंटेंट. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी,
Option D, constant 10. Which of the following has alloy with nickel content zinc in addition to copper and nickel? Say answer है constant 10. Next, Monel alloy is the costlier of all the alloy of nickel, not suitable for making kitchen utensil, yeah, used for making steam valve and turbine blade as it resists steam attack at high temperature, yeah, not used in cast and rod form. Say answer है option C. Monel alloy is used for making steam valve and turbine blade as it resists steam attack at high temperature. Next, which of the following Monel alloy contains aluminium in addition to copper and nickel and has good corrosion and oxidation resistance beside high grip strength at elevated temperature? K Monel, R Monel, H Monel या S Monel? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए K Monel. Which of the following metal Monel alloy contain aluminium in addition to copper and nickel and has good corrosion and oxidation resistance besides high grip strength at elevated temperature? सही आंसर है K Monel. Next, which of the following is not an alloy of nickel and chromium? Inconel, Hastelloy, Nemonix alloy या Duralumin? सही आंसर है ऑप्शन डी Duralumin. Duralumin. Which of the following is not an alloy of nickel and chromium? सही आंसर है Duralumin. Next, because of their low creep rate and high resistance to high temperature oxidation, super alloy are used for main blades and store of jet engine which operate at above 900 degrees centigrade for prolonged periods. They are dash based alloy. Cobalt, iron, nickel या none of these? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी none of these. Because of their low creep rates and high resistance to high temperature oxidation, super alloy are used for main blades and rotors of jet engine which operate at above 900 degrees centigrade for prolonged periods. They are dash based alloy. सही आंसर है none of these. Next, Hastelloy is not subjected to precipitation hardening या does not contain molybdenum या is not used in cast iron या has high strength and oxidation and corrosion resistance. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी does not contain molybdenum. Hastelloy does not contain molybdenum. Next, which of the following alloying component is absent in maraging steel? Nickel, aluminium, cobalt या molybdenum? सही आंसर है ऑप्शन बी aluminium. Which of the following alloying component is absent in maraging steel? सही आंसर है aluminium. Next, which of the following is not a copper based alloy with nickel? German silver, Monel metal, Inconel या Constantan? सही आंसर है ऑप्शन सी Inconel. Which of the following is not a copper based alloy with nickel? सही आंसर है Inconel. Next, which of the following commercial metals is most abundantly found in India? Copper, aluminium, nickel या zinc? सही आंसर है ऑप्शन बी aluminium. Which of the following commercial metals is most abundantly found in India? सही आंसर है aluminium. Next दोस्तों, aluminium as a material of construction suffer from the disadvantage of very high cost, low tensile strength या low strength to
वेट रेशियो या स्कार्स अवेलेबिलिटी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एल्यूमिनियम एज ए मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है Aluminium alloy is one of the most suitable material of construction for aircraft mainly due to its high strength to weight ratio या low temperature strength properties या its availability to be cast या rolled, forged and stamped या high strength and corrosion and oxidation resistant at elevated temperature। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। एल्यूमिनियम एलॉय इज वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर एयरक्राफ्ट मेनली ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। नेक्स्ट है दोस्तों पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम टर्नरी एलॉय आर susceptible to aging, that is increase in strength and hardness with time। या B, aluminium alloy are stronger than pure aluminium। या C, aluminium alloy compared to pure aluminium have better hardness and impact resistance and higher fatigue strength। या D, aluminium alloy cannot be used in both the cast and wrought form। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम एलॉय कैन नॉट बी यूज इन बोथ द कास्ट एंड रॉट फॉर्म। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय containing up to 7% magnesium cannot be welded, are weaker than pure aluminium या develop extra hardness by cold working या are suitable for very high temperature application। सही आंसर है ऑप्शन सी, develop extra hardness by cold working। Aluminium magnesium alloy containing up to 7% magnesium develop extra hardness by cold working। next है which of the following explain the edge hardening phenomenon of alloy? knot theory, कोहेरेंट लैटिस थ्योरी या बोथ ए एंड बी या नेदर ए नॉर बी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द एज हार्डनिंग फेनोमेनन ऑफ एलॉय? ए नॉट थ्योरी एंड बी कोहेरेंट लैटिस थ्योरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ओवर एजिंग ऑफ एलॉय रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन its hardness, the size of equilibrium precipitate particles या C, number of equilibrium precipitate particles या D, all F, B and C। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, the size of equilibrium precipitate particles। over aging of alloy results in increase in the size of equilibrium precipitate particles। नेक्स्ट है टाइटेनियम मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म या कैन नॉट बी वेल्डेड या सी इज यूज्ड इन ओशियानोग्राफिक एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एप्लीकेशन या डी, ऑल ऑफ अबव। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टाइटेनियम मेटल इज यूज्ड इन ओशियानोग्राफिक and space exploration application। next as hardening of duralumin is due to copper manganese या both A and B या neither A nor B। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, both A and B। as hardening of duralumin is due to copper and magnesium। next as hardening of aluminum alloy may not take place at room temperature, at higher temperature accelerate the rate of hardening या C is also
टर्म एज टेम्पर हार्डनिंग, या डी बोथ बी एंड सी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एज हार्डनिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय एट हायर temperature accelerate the rate of hardening in C is also termed as temper hardening. Next, pick out the wrong statement. Titanium exists in two electrotropic form, that is alpha form HCP stable at room temperature and beta form BCC stable from 885 to 1675 degree centigrade. And B, aluminum is an important alloying element for titanium alloy as it acts as an alpha form stabilizer. C, beta phase of titanium is much stronger but more brittle than the alpha phase. D, titanium is heavier than both aluminum as well as steel. सही आंसर है ऑप्शन डी, titanium is heavier than both aluminum as well as steel. Next है दोस्तों, which of the following is the highest of engineering metal? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या टिन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मैग्नीशियम। which of the following is the lightest of engineering metal? सही आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम एलॉय आर फेरोमैग्नेटिक, हाईली एनोडिक या नॉन इनफ्लेमेबल या नॉट एक्सट्रूडेड। सही आंसर है ऑप्शन बी हाई एनोडिक, हाईली एनोडिक। Magnesium alloy are highly anodic. Next, copper has very low malleability, ductility, tensile strength या thermal and electrical conductivity. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉपर हैज़ वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।